Hello and welcome once again, you all guys, into my YouTube channel. As you know, this is Dr. Ajaz Ahmad Bhat, and once again, I welcome you into the YouTube channel. आज का जो ये वीडियो है, that is based on the cyber crimes. साइबर क्राइम क्या है एंड दिस इज द न्यू टॉपिक और इस चीज़ को लेके आप लोगों को बहुत ही इन्फॉर्म होना चाहिए, है ना. दीज डेज वी हैव सीन मनी ऑफ द केसेस ओवर देयर इन द मार्केट, सो दैट we have to overcome that situation. We have to overcome these kind of crimes in day-to-day lives. So I come out with a new video that is based on the cyber crimes. Okay, let me take you on with the introduction of the cyber crime. But before that, I'll tell you, kindly subscribe and share this video as well with your friends. That would be profitable, that would be useful to your friends and for those who are busy with the internet, online internet banking, like internet banking and online shopping and all, and those who are with the attached, those who are with the connected with the banks for their daily purpose activities, like a debit card, having a debit card, having a credit card and all, even the SIM cards too. So no one in the world right now, those who have not such kind of alternatives within their lives. So let me take you on with the introduction of cybercrime. So cybercrime जो है, there are there are many definitions out there in the cybercrime. In any legislation or rule book, the term cyber refers to something that has to do with the computing, information technologies, the internet or virtual reality. So as a result, cyber crimes are described as an offenses involving computers, information technology, the internet and virtual reality. Okay, and the cyber crime is described as an illegal activity involving a computer network or a network system. It is mainly perpetrated like a illegal activity involving over there. So you can see on the screen that criminal activities ऐसी है जो carried out होती है by the means of computer, by the means of internet. So ऐसी सारी activities की जाती है, that is totally illegal activities, even those activities which are being prohibited by the IPC, Indian Penal Code है जो है 1860 जो एक्ट है, उन्होंने इसको पहले से ही प्रोहिबिट किया हुआ है, ऐसी एक्टिविटीज दैट इज टू बी डन बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट एज वेल. तो ये सारी चीजें जो कहती है, दीज आर सेड टू बी द इलीगल एक्टिविटीज लाइक इन्वॉल्विंग कंप्यूटर्स एज एन इंस्ट्रूमेंट, कमिटिंग फ्रॉड, ट्रैफिकिंग इन चाइल्ड pornography and intellectual property, stealing identities or violating privacies. साइबर क्राइम जो है, इसमें इन्वॉल्व क्या होती है, कौन सी एक्टिविटीज आर लाइक इन ट्रेडिशनली इन नेचर, सच एज थेफ्ट, फ्रॉड, forgery, defamation and mischief, of all which are subject to the Indian Penal Code and IT Act. As I told you earlier, ऐसी सारी एक्टिविटीज, ऐसी सारी जो काम जो किया करते हैं लोग विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरनेट एंड ऑल. सो इन सारी एक्टिविटीज को हमने देखा कि आईपीसी कोड जो है, इंडियन पैनल कोड जो है, उन्होंने पहले से इनको क्या किया हुआ है, प्रोहिबिटेड किया हुआ है, ठीक है ना. एंड द एक्ट IT Act 2000. ओके, सो मूव ऑन टू द साइबर क्राइम एट ग्लैंस. साइबर क्राइम जो है ये साइबर सिक्योरिटी जो है डज नॉट गेट एज मच अटेंशन एज इट डिजर्व्ड. देखिए आजकल के जो ज़माने में, आजकल की जो दुनिया में जो है, वर्ल्ड वाइड देखा जाए, एक साइबर सिक्योरिटी जो है ये चैलेंज बना हुआ है फॉर द ऑल. अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, द ग्लोबल लॉसेस ड्यू टू द साइबर क्राइम reached 608 बिलियन इन 2017 में. तो इसके बमुकाबले 2017 टिल नाउ इट इज आफ्टर 4 years कितना गड़बड़ हो चुका होगा, है ना, कितने फ्रॉड्स हो चुके. ए फिगर दैट वाज एट 4.5 बिलियन इन 2014 सॉरी. सो इसमें जो सबसे बड़ी चीज जो है, financial gain जो है, is the main reason for such cybercrime attacks. According to an estimate, an average hacker makes
90,000 rupees per year. ठीक है ना. So back home, NCRB data pointed out that among 29 states in India, Uttar Pradesh is the first position in the cybercrime list. उत्तर प्रदेश पहली ऐसी स्टेट है जहां पे पहला साइबर क्राइम का देखा गया है. ठीक है ना. Out of 29 states of India, the most important areas for the theft of intellectual property and confidential business information. Even आप लोगों को शायद मैं ये बता के चलूं, during the pandemic situation, our pharma companies and hospitals are under constant threat or cyber attacks. ये जो इस दौरान हुआ है, जो पैंडेमिक इशू है आफ्टर कोविड, जो इंडिया में पूरे वर्ल्ड में इन्वॉल्व हो गए लोग, तो उस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडिया की कंपनीज उस थ्रेट में आ गई, उस साइबर क्राइम में आ गई, दैट इज द फार्मा कंपनीज एंड द हॉस्पिटल्स. ये हम सब जानते हैं कि साइबर क्राइम्स जो है, साइबर क्राइम्स एंड हॉस्पिटल्स इन लोगों को क्यों अटैक करते हैं. I'll define you later on, but before that, I'll take you over the glance like that. Supreme Court gives strict orders to combat hacking, cyber crimes, and theft. According to the Norton Life Lock Survey, 1.24 trillion amount involved. India lost revenue due to cyber crimes, hacking, and theft from 2012 to 2019. On records जो है, that is 44.4 thousand cases. यहाँ पे हमें ध्यान देना पड़ेगा कि 44.4 thousand जो cases है, that is being involved, that is being done with the help of this computerized internet as a kind of a source उनके लिए है. First case of cybercrime observed in New York back in 1973 for 2 million cash. This is the point that you guys have to remember. That's न्यूयॉर्क में पहला ऐसा केस था जो सामने आया, दुनिया के सामने पहला आया केस. And the first email spam took place 1978 and the first virus installed on an Apple computer 1982. These are the information. Even sometimes we used to remember this for the sake of the in examination and the GK general knowledge information. Okay. As I told you, cybersecurity in India has not received the attention as it deserved. Plead in Supreme Court seeks guidelines to combat hacking, cyber crimes, data theft. ऐसे बहुत सारी चीजें जिनके लिए किया जाता है. Okay, so the types of hacking, इसकी कौन कौन से types है, ठीक है ना. First is there hacking. Hacking किसे कहते हैं इन जनरल लाइफ में सबको पता है कैसी होती है. Act of compromising digital devices and networks through unauthorized access to an account or computer system, जिसे कहते हैं हैकिंग हम लोग. दूसरा जो मैंने आप लोगों को कहा, दैट इज द क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, an inclusive term for the fraud committed using an payment card such as credit card and debit card. This is the basic thing that we should learn, how to use the credit cards, how to use the debit cards. Even most of time when we use the browsers like the Chrome or some other browsers for the sake of information, for the sake of online purpose, for the purpose transferring the amount like that on okay. So sometimes the Chrome is used to save your information for the next purpose, for the next transaction. So remember that you should not keep records on your phones. Like sometimes they track you, the trafficking your cell phones and get the information that actually they need and to transmit you and to get information from your phones. So ये जो है इंडिया जो है इसमें सबसे 5th नंबर पे है, कंट्रीज में है, टॉप मोस्ट कंट्रीज में विद रिगार्ड टू द क्रेडिट कार्ड फ्रॉड. जो क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड हुआ है वो 5वें नंबर पे है वर्ल्ड वाइड में. पांचवा नंबर आता है इंडियन कंट्रीज को. ओके, नेक्स्ट इज देयर वायरस डिसेमिनेशन, process of malicious software that attaches to other software that destroys the system of victim. जो एक बंदा है, जो विक्टिम बन जाता है, जो एक कोई भी इंडिविजुअल, it could be you, me and anyone out in the world that can be the victim, that is to be victimized by the person who working as a cyber crime, जो साइबर क्राइम करता है
उस बंदे को उस बंदे जो बंदा होगा वो किसी को भी इसके लिए मार्क कर सकता है। तो वो क्या करते हैं, वो मॉलशस कुछ सॉफ्टवेयर मटेरियल जो है इंस्टॉल कर लेते हैं, है ना, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। किसी के भी फोन में घुस जाते हैं, किसी के भी सिस्टम में घुस जाते हैं। तो फिर उसके बाद वंस जो ये इंफॉर्मेशन वहां पे चली जाती है ना, उनका जो सॉफ्टवेयर होता है, वायरस चला जाता है, देन दे कैन ग्रैब ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर फोन्स, द सिस्टम्स एंड ऑल। तो इस चीज के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक मैं सुझाव बता दूंगा कि व्हाट वी शुड डू टू ओवरकम द सिचुएशन लाइक दैट। We should use very tough, very hard, yeah, very we can use like that. We can use hard passwords that cannot easily breach by the person who working as an who was working behind the cyber crime. Okay, next one is there cyber terrorism. It refers to the unlawful attacks and threats of attacks against the computers, networks, and the information stored therein. ये बहुत ही बड़ा खतरनाक चीज है। साइबर क्राइम्स भी होते हैं आजकल और साइबर टेररिज्म भी हो जाता है। लाइक कि थ्रेट्स ईमेल से दिया जाता है, फोन से मैसेज दिया जाता है, एंड जो बहुत सारी चीज़ों को आप जान सकते हो कि नेटवर्क्स को इस्तेमाल किया जाता है जस्ट फॉर सेक ऑफ डिस्ट्रॉइंग द other information, other nations information, and that information is secretarial, that information is very sacred to them, that information is very confidential in them. So जो information एक बहुत ही अजीम चीज़ रखती है, मायने रखती है नेशन के लिए, उस चीज़ को यूटिलाइज करते हैं, then they can benefit out of that, like the ransomware पैसे मांगेंगे कल को, है ना। इवन ransomware जो अटैक्स है एंड रेवेन्यू लॉस्ट है, ये कैसे किया जाता है, इट्स बिकॉज ऑफ द malware that encrypts and victims file. The attackers demand a ransom from the victims to restore access to the data upon payment. It is a form of extortion software that can block your computer programs. As I told you earlier कि जो रिपोर्ट सामने आया है, हाल ही में रिपोर्ट आया है, न्यू रिपोर्ट बाय द चेकपॉइंट रिसर्च suggests that India is the most impacted country with 213 ransomware attacks. Cybersecurity firm Sophos said in its global report that attacks cost Indian organization an average of 8 crores in the last in the last decade. Right, one of the American leading multinational corporation, Cognizant, yes, Cognizant was also attacked by the ransomware called Maze. The company faced a huge loss due to the same. तो ये भी ऐसी चीज है जो हमने देखा है कि रैनसमवेयर जो है लास्ट टाइम अमेरिका की एक कंपनी है कॉग्नाइजेंट, उसको भी इन्होंने टारगेट किया है एंड टू गेट मनी फ्रॉम देम एज वेल। द वन मोर इज द पॉइंट इज देयर सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी इज द एक्ट ऑफ स्टीलिंग सॉफ्टवेयर दैट इज लीगली प्रोटेक्टेड। आपका फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई आपका सॉफ्टवेयर है जो कि आपके फोन में बहुत ही लीगल है और साथ साथ में वो नहीं पायरेटेड नहीं है, दैट इज द लीगल, और आपने परचेज किया हुआ है, ठीक है ना। कोई बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं ऐसे, और जो बंदा होता है साइबर क्राइम करने वाला, है ना, जो साइबर क्राइम के पीछे होता है, जिसका हाथ होता है, ही कैन यूज योर इंफॉर्मेशन, ही कैन यूज योर सॉफ्टवेयर टू स्टील anyone's information as well and to make the fraud as well. Spoofing, act of disguising a communication from an unknown source as being from an unknown trusted source. ये भी बहुत बड़ा खतरनाक चीज़ है जो कि हमको इंफॉर्मेशन अवेयरनेस होनी चाहिए इस चीज़ के लिए। सो वन मोर पॉइंट हिज, जो मैं आपको यहाँ पे डेटा दिखाता हूँ, आप यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ दिस, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो पड़ा है बेसिकली साइबर क्राइम से, इन विच सेज क्लोज टू 600 बिलियन एंड क्लोज टू 1 GDP। CSIS सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्ट्रेटेजीज का रिपोर्ट है ये। And growth of cybercrime seems rapidly adopting due to the advanced technology since 3 years. 3 years में हमारे पास जो अभी आजकल का जो सॉफ्टवेयर है, सॉरी इंटरनेट जो कम्युनिकेशन, दैट इज व्हाट द 5G है ना, सॉरी 4G के इस्तेमाल से या 5G के इस्तेमाल से ये ज्यादा केस हमारे सामने आते हैं, है ना। तो आपके पास और डेटा यहाँ पे अवेलेबल है जो मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ आपके साथ, यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ दिस, है ना। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज हियर LG जो जनरल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है डॉक्टर राजेश पंत, पॉइंटेड आउट डार्क इरा
ये उसने डार्क एरा डिफाइन किया हुआ है. ओनली अ फ्यू कंपनीज हु हैव टाइटनड देयर cyber security and ransomware attacks increasing day by day, and most of importantly they attacking hospitals, as they know they in an emergency hospital will pay, and attackers are working for from the home as well. As I told you earlier कि मैं इस चीज को डिस्कस करूंगा अर्ली, कि मैं लेटर ऑन डिस्कस करूंगा. दैट इज द पॉइंट which I should have to discuss with you like that, कि ransomware attacks क्यों किए जाते हैं ज़्यादातर फार्मेसी कंपनीज में, फार्मा कंपनीज एंड with the hospitals, because they are in hurry, they are in emergency. Most of times they used to have in emergency the patient like there or there. So उनको ट्रीट करने में और साथ साथ में जो क्राइम्स आ जाते हैं उनके पास, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम वी कैन डिफाइन द थिंग्स व्हाई दे डू एक्चुअली दैट. सो वो उनके पास इमरजेंसी ज़्यादा होती है, बिकॉज ऑफ दैट दे कैन केम अंडर द दैट सच काइंड ऑफ अम्ब्रेला. ओके, यहाँ पे और आपके पास रिपोर्ट है रैनसमवेयर अटैक साइबर सिक्योरिटी फर्म सोफस रिपोर्टेड, जो है ऑन हॉस्पिटल्स. ये मैंने भी आपको इस साथ डिफाइन किया अकॉर्डिंग टू साइबर पीस फाउंडेशन न्यू दिल्ली का रिपोर्ट है ये आपके पास. यू कैन सी इट. Okay, the new point is here: use of full service internal security suite. That these are the information that you should utilize, that you should adopt at your home. Use full service internet security suite. ठीक है ना. नेक्स्ट पॉइंट, यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जो कि आपके पासवर्ड होंगे वो क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा 10 लेटर्स का होगा. दैट शुड बी नंबर्स, सिंबल्स एंड ऑल दिस इंफॉर्मेशन शुड बी very confidential, that anyone cannot steal it easily. Keep your software updated. आपका जो अपना सॉफ्टवेयर होगा that should be updated day to day. That will help you to make your information secure. मैनेज योर सोशल मीडिया सेटिंग्स. ठीक है ना. जैसे सोशल मीडिया हम फॉर एग्जांपल एफ बी चलाते हैं हम लोग, इंस्टा चलाते हैं हम लोग, ट्विटर यूज़ करते हैं. मोस्ट ऑफ सोशल जो है मीडिया है वी यूज़ देम, लेकिन हमें चाहिए कि हम अपने इंफॉर्मेशन जो है उसको प्रिजर्व करके रखें, एंड अपनी जो सोशल मीडिया की जो सेटिंग है दैट शुड बी वेरी टाइट. ओके, स्ट्रेंथ योर होम नेटवर्क. जो अपने घर का फॉर एग्जाम्पल हम वाईफाई यूज़ करते हैं या कोई और चीज़, कभी कभार हम मार्केट में जाते हैं और पब्लिक वाईफाई यूज़ करते हैं, वेदर इट इज़ अ लाइब्रेरी, केफ, होटल और एयरपोर्ट, है ना. तो ये जब हम यूज़ करते हैं ना, वो वाईफाई यूज़ करते हैं, वो भी उनके लिए एक तरह का एक बन जाता है उनके लिए हथियार, है ना. काइंड ऑफ ए टूल that can utilize your information to take advantage out of you. Talk to your children about the internet, how to use it, how not to use, what is the information therein, and what the sites they should go through and what sites they should not go through, right? So this information will help them to prevent themselves from the online harassment, stalking or bullying like that, है ना. तो ये एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करनी चाहिए, बिकॉज आवर जो चिल्ड्रंस है दैट इज द नेक्स्ट जनरेशन, है ना. अगर उनको अभी ऐसे ही हरासमेंट हो जाएगी या अभी स्टॉकिंग हो जाएगी, बॉलिंग होगी या इस तरह की कोई भी इनके साथ फ्रॉड होगा, दे विल गेट डिमोरलाइज विद द हेल्प ऑफ विद दिस इंफॉर्मेशन. इवन खामा खा उनको परेशानी होगी. तो इसलिए है बेटर टू अवॉइड दीज hardships. So in case of that, we should use information, we should aware them about that. Keep update on major security breaches like that, as I told you earlier. Take measures to help protect yourself against the identity theft, है ना. Most of times we receive information like data used, send and receive online, especially when accessing the internet and public Wi-Fi. Told you earlier, right? Discuss किया हुआ है. Know that identity theft can happen anywhere. ये कभी भी कहीं भी हो सकती है, because जो है it's smart to know how to protect your identity even when traveling. There are a lot of things you can do help keep criminals from getting your private information on the road. Like these include keeping your travel plans of social media and using a VPN when accessing the internet over your hotel Wi-Fi network. For example, जो कोई बहुत ही कुछ बंदा होता है ना, फॉर एग्जांपल बात करते हैं सीएम की, एमपी की या पीएम की बात करते हैं, जो ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह से करते हैं. तो व्हेन दे यूज इंफॉर्मेशन एज व्हाट दे आर सपोज टू डिस्कस, व्हाट दे आर सपोज टू ट्रांसफॉर्म या ट्रैवल करना चाहते हैं, तो उसके इंफॉर्मेशन अगर वो पहले से ही शेयर करे हैं, दैट विल लीड टू देम विद फ्रॉड एंड लाइक दैट. कीप एन आई ऑन द किड्स. हमेशा अपने बच्चों को उन पे विजिलेंट रहो.
that can help them to be very what we say secure from this, है ना. Known what to do if you became a victim. अगर आप victim बन गए क्या करोगे आप at the time. So you need to be alert the local police. Your report may assist authorities in their investigation or may help to stop criminals from taking advantage of people in the future. If you think several criminals have stolen your identity, so contact companies and banks where you know the fraud occurred. Place fraud alerts and get your credit card reports. Credit reports. अगर आपके बैंक से खाते से पैसे निकल गए हैं तो उसके रिलेटेड पहले आपको इन्फॉर्म करना होगा उस बैंक को. ये सारी चीज़ें आपको बाकायदा उनके साथ डिस्कस करनी है. व्हाट हैपन एक्चुअली, व्हाट नॉट हैपन, व्हाट द इंफॉर्मेशन इज गिवन गॉट फ्रॉम योर अकाउंट एंड व्हाट द अमाउंट हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट, लाइक दैट. सो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको उनके साथ शेयर करनी हो, बताना भी हो उनका. So, punishment penalties for the cybercrime. As per Section 43, subsection 66 of the IT Act, punishes a person committing data theft, transmitting virus into a system. उसके लिए at least 3 साल का और a fine of rupees 5 lakhs or both, है ना, which would be applicable, and sometimes both punishment and fine will be applicable. Punishment and penalties will apply to them because it based on the conditions, is based on to the terms and the condition and the policies and the actor involved over there. I hope you guys will take an advantage out of this lecture. So please kindly commit me below the section और मुझे बता दीजिए ये लेक्चर आप लोगों को कितना अच्छा लगा. And I'll come with the next video. I try to present you the new information that aware you all guys to make aware about the new tactics, new policies, and that are emerging in the new era. So we're trying to personally to make you aware about that. I hope you guys will enjoy this video. Kindly share, subscribe and कमेंट भी करिए साथ साथ में एंड शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ. दैट दिस will prove to be helpful for them as well. Thank you so much guys. Stay happy and watch